Students, welcome back to our video coaching. Today we will discuss covalent bond. For ODI medium students, it is सहसंयोज्य बंध. ओडिया वर्ड टाक भूली जाओ. Remember the English word covalent bond. So कौन पढ़िच तुम covalent bond रे? Two atoms, ये गोटे इलेक्ट्रॉन दिए, से गोटे इलेक्ट्रॉन दिए, देन से भितर बॉन्ड फॉर्म हुए. कोभालेंट बॉन्ड टिके पूर्व आम आयोनिक बॉन्ड पढ़िले. आयोनिक बॉन्ड रे कौन देखी वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, अदर एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. हियर आम देखा बोथ आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, माने ये गोटे इलेक्ट्रॉन देथिबो, सी गोटे इलेक्ट्रॉन देथिबो, बा ये टू इलेक्ट्रॉन दबो, सी टू इलेक्ट्रॉन दबो, एंड से माने गोटे ग्रुप फॉर्म करिवे. से ग्रुप टाकू ये भी ऑक्युपाई करिवो, सी भी ऑक्युपाई करिवो, माने से ग्रुप ऊपर बोथ एटम्स रो ऑक्युपेंसी रहिबो. That is called sharing of electrons. Previous video रे मु बुझेइथिली. एठी अब डिटेल देखिबा केमिति शेयरिंग होची मेनली हमें पढ़िबा. हाई स्कूल कैरियर रे तुम पढ़ी दलो कोभालेंट बॉन्ड माने फॉर्मिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, टिके डिटेल पढ़िबा दिस वीडियो रे. सो फर्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ कोभालेंट बॉन्ड. द मेन पॉइंट, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स. माने ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टू सिमिलर एटम्स भीतर ही परिबो, माने हाइड्रोजन हाइड्रोजन भीतर शेयरिंग ही परिबो, क्लोरीन क्लोरीन भीतर शेयरिंग ही परिबो, और टू डिसिमिलर एटम्स भीतर भी शेयरिंग ही परिबो, माने हाइड्रोजन और क्लोरीन भीतर भी शेयरिंग ही परिबो, बा हाइड्रोजन और आयोडीन भीतर भी शेयरिंग हो पारिबो. ओके, सो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स माने क्लोरीन क्लोरीन, और बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स माने हाइड्रोजन और क्लोरीन. सो लिखा हला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. कोभालेंट बॉन्ड फॉर्म करने इलेक्ट्रॉन शेयर होगापी से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी लेस. बिकॉज प्रीवियस वीडियो रे हमें देखिले इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जदि हाई थिबो, वन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, अदर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. बट इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिकम्स लेस, पाखापाखी हो जाए बोथ रो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, देन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस हो पारिबोनी, शेयरिंग टेक्स प्लेस. तेणु डेफिनेशन लिखा है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर एटम्स और डिसिमिलर एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस. माने टू एटम भितर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस टा वेरी लेस अच्छी, माने एटम गुड़ाकर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जदि नियरली सेम अच्छी, देन से भितर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पारिबनी, शेयर हम. ओके, एंड शेयर हेबा जो बॉन्ड टा फॉर्म हम, दैट इज कॉल्ड कोभालेंट बॉन्ड. नाउ डिस्कशन करिबा हाउ दिस शेयरिंग टेक्स प्लेस. लिसन स्टूडेंट्स, हाउ दिस शेयरिंग टेक्स प्लेस एटा तुम क्लास 10th रे जानिन. एठी नुआ कॉन्सेप्ट आसीबो, मन देके सुनो. एटॉमिक स्ट्रक्चर रे हमें देखिले ऑर्बिट, सबऑर्बिट, ऑर्बिटल, बा सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, सेल भितर सबसेल, सबसेल भितर ऑर्बिटल, एंड ऑर्बिटल भितर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रही परिबो. माने एनी ऑर्बिटल भितर 0 इलेक्ट्रॉन रही परिबो, बा 1 इलेक्ट्रॉन रही परिबो, बा 2 इलेक्ट्रॉन रही परिबो. एंड वी नो ऑर्बिटल भितर 2 इलेक्ट्रॉन रहिले तो ऑर्बिटल बिकम फुल्ली फिल्ड एंड स्टेबल. सो लिसन स्टूडेंट्स, इफ 2 एटम्स पाखापाखी आसंती, आर गोटे ऑर्बिटल थिबो जो भितर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थिबो, दिस एटम रे भी सेमिति गोटे ऑर्बिटल थिबो जा भितर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थिबो. बुझी पारुछ? ये गोटे एटम मानकर ए, ये गोटे एटम मानकर बी. ए हैज 1 ऑर्बिटल व्हिच कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, B similarly has 1 orbital which contain 1 electron. Then they जदि क्लोजर हेई ऑर्बिटल दिटा ओवरलैप करि जीवो, तार ऑर्बिटल और आर ऑर्बिटल ओवरलैप करि जीवो, ताहेले से ओवरलैपिंग रीजन को बोथ रो इलेक्ट्रॉन आसी जीवो. सो दिस ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन हे जीवो 2 एंड दिस ऑर्बिटल रो भी इलेक्ट्रॉन हे जीवो 2. मैं एग्जांपल देकी बुझेबी कोन मु कहूची, सुन मन देगिरी.
ऑर्बिटल रे 2 इलेक्ट्रॉन रहिले ऑर्बिटल स्टेबल and we know every system in this universe wants to remain in stable form. So if dita atom pakhapakhi होउचंती this atom रे गोटे ऑर्बिटल अच्छी जा भितर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अच्छी this orbital रे 1 atom अच्छी जा भितर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अच्छी if से माने ओवरलैपिंग हे जिवे ताहले ओवरलैपिंग रीजन भितर को both electron आसीजिव so this orbital be stable कहबा and this orbital be stable कहबा. Look at the example hydrogen 2 hydrogen atom closure हेले हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन 1s1 दिस हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 माने 1s माने स्फेरिकल ऑर्बिट तण स्फीयर देखैली माने अछि ना s रो शेप होची स्फीयर p रो शेप होची डम्बेल d रो शेप होची डबल डम्बेल एंड f रो शेप होची ट्रिपल डम्बेल सो f तो आसीबनी d भी बेसी आसीबनी s p को माने रखो s होची स्फेरिकल p होची डम्बेल. ओके सो हियर s होची सबसेल बा ऑर्बिटल डा तण स्फीयर नेली एंड सेतरे 1 इलेक्ट्रॉन नेली हियर आल्सो s होची स्फीयर नेली एंड ता भितरे 1 इलेक्ट्रॉन नेली सो दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच पाखा पाखी क्लोजर हेले. देखो स्टूडेंट्स मु बोर्ड रे डायग्राम टे ड्रा करछि एंड भल फिगर टे इंटरनेट रो कलेक्शन करी देखौछि सेमितिका फिगर तो मो बोर्ड रे ड्रा करि परिबिनी जेमितिका फिगर ता मो तुमको एबे देखौछि तेणु ताकू देखिकी रिलेट करिकी बुझो कौन होची ना दिस इज एन एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल दिस इज एन एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एंड वी नो बोथ चाहिबे सेमानकर ऑर्बिटल रे 2 इलेक्ट्रॉन हे की फुली स्टेबल हेबा पई केमिति से माने ईच ऑर्बिटल रे 2 इलेक्ट्रॉन करिवे ना से माने क्लोजर हेकरी ओवरलैप करि जिवे आर ऑर्बिटल ओवरलैप करि जिवे ओवरलैप कर देले से ओवरलैपिंग रीजन भीतर को 2 इलेक्ट्रॉन आसी गला. नाउ लुक एट ओवरलैपिंग रीजन भीतर जो 2 इलेक्ट्रॉन आसी गला दिस हाइड्रोजन एटम रो भी 2 इलेक्ट्रॉन मु कहि परिबी दिस हाइड्रोजन एटम रो भी 2 इलेक्ट्रॉन मु कहि परिबी ईच हाइड्रोजन एटम रो ऑर्बिटल भितर नाउ 2 इलेक्ट्रॉन रही गला बिकॉज से ओवरलैपिंग हेकरी कॉमन एरिया भितर को आसी गले सो दिस हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हैला दिस हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हैला सो शेयरिंग हैला इलेक्ट्रॉन एटी शेयरिंग हैला बोथ स्टेबल हेले सो से मानव भितर गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हैला दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. सो मेनली दैट इज से मानव भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हैला दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग. So students, main point of covalent bonding is overlapping of orbitals. हाइड्रोजन रे एग्जांपल देखी छेठे आगु आगु आउरी भी एग्जांपल देबी. सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 atoms becomes closer and orbitals overlap each other. ऑर्बिटल ओवरलैप हे गले आर 1 इलेक्ट्रॉन थिबो तार 1 इलेक्ट्रॉन थिबो ओवरलैप हे गले ओवरलैपिंग रीजन भीतर को 2 इलेक्ट्रॉन आसी जिवो सो आर भी ऑर्बिटल स्टेबल तार भी ऑर्बिटल स्टेबल. सो कोवैलेंट बॉन्ड विषय सेकंड लाइन कौन लिखा हला ए कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच अराइज डेवलप हुए ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम. This line is very important. Overlapping of half filled orbitals of atom. Atom गुड़िकर ऑर्बिटल गुड़ाक ओवरलैप हबो को ऑर्बिटल गुड़ाक ओवरलैप हबो हाफ फिल्ड. गोटे ऑर्बिटल केतेबेले हाफ फिल्ड जेतेबेले ता भितर 1 इलेक्ट्रॉन रहइबो केतेबेले फुली फिल्ड जेतेबेले ता भितर 2 इलेक्ट्रॉन रहइबो. सो फुली फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करि परिबेनी बा वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करिबेनी. इफ गोटे ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन 0 नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सी भी ओवरलैप करि परिबेनी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करिवे दीटा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कले बोथ फुली फिल्ड हे जिवे. तेणु डेफिनेशन रे लिखा हला ए कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच arise due to overlapping of half filled orbitals of atom. Sharing of electron takes place due to overlapping. Okay, ei overlapping jogo ame कहू sharing of electron takes place. Example हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम मिसी के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कले ऑलरेडी मु डिस्कस करछि फिर भी एठी रीडिंग मार दो देखो each hydrogen atom contain one half filled orbital that is 1s1 half filled orbital
If two hydrogen atom becomes closer, then two half filled orbitals overlap. Two hydrogen atom closer हो गए, two half filled orbitals overlap such that both of them get 2 electron each. This overlapping जोगु this hydrogen atom भी 2 electron पाइला, this hydrogen atom रो orbital भी 2 electron पाइला, hence both become fulfilled and stable, forming H2 molecule. Both जेतोले fulfilled हो गए, stable हो गए, a force of attraction develops between them and H2 molecule is formed. फिगर रे देखिए नाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल. लुईस डॉट स्ट्रक्चर माने इलेक्ट्रॉन गुडा को डॉट बा क्रॉस द्वारा देखै कि फिगर ड्रा करबा होछि लुईस डॉट स्ट्रक्चर. सो हाइड्रोजन रो 1 इलेक्ट्रॉन देखैली, दिस हाइड्रोजन रो 1 इलेक्ट्रॉन देखैली, बोथ कंबाइन कले, क्लोजर हेले, ओवरलैपिंग हेले, कंबाइन कले, कंबाइनिंग एरिया को 2 इलेक्ट्रॉन आसीगला. दिस 2 इलेक्ट्रॉन दिस हाइड्रोजन रो भी कहि परिबा, दिस हाइड्रोजन भी कहि परिबा, दिस 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन रो पछले कोन कहि परिबा, दिस हाइड्रोजन एटम रो भी कहि परिबा एंड दिस हाइड्रोजन एटम रो भी कहि परिबा. बोथ पाखरे दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स अछि. ओके, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भितरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हेले, एरो मार्क H और H भितरे बॉन्ड हेकिरी फॉर्म कला एरो मार्क H2 and this represents a covalent bond. And if ये 1 इलेक्ट्रॉन देछि, सी भी 1 इलेक्ट्रॉन देछि, ताहले कोवैलेंट बॉन्ड भितरे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हला, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. So you know in your class 10th career, single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond. So single covalent bond माने covalent bond भितरे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थिबो. ये गोटे इलेक्ट्रॉन देछि, से गोटे इलेक्ट्रॉन देछि, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हला. सो दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड. This is the simple introduction of covalent bond and hydrogen molecule example देली. Then आमे आउरी भी दीटा example discussion करिवा जो थिरे double bond formation सिखिबो, triple bond formation सिखिबो. So write down this much. Students, now we will discuss another example of formation of covalent bond, that is oxygen molecule. Oxygen atom and oxygen atom मिसिकी oxygen molecule form करचंती. तो oxygen रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को माने पकाओ. oxygen रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोन? 1s2 2s2 2p4 and 2p4 भितरे 2px रे 2 इलेक्ट्रॉन, 2py रे 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz रे 1 इलेक्ट्रॉन. टिके जदि रिकॉल करि परिबो ऑक्सीजन रे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 and 2p सबसेल भितरे 3 ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz समस्त को 1 1 इलेक्ट्रॉन देली. देन पेयरिंग स्टार्ट कली. सो 2px रे 2 हला, 2py रे 1 रहिला, 2pz रे 1 रहिला. तेणु मु लिखिली each oxygen atom contain 2 half filled orbitals, 2py1 2pz1. This you can know from electronic configuration. Okay. So 2 half filled orbital asila, each oxygen atom, this oxygen atom रे 2pz half filled orbital, 2py half filled orbital, this is also an oxygen atom, 2py रे half filled orbital, 2pz रे half filled orbital. If they come closer, then 2py1 of one atom overlap with 2py1 of other. माने when they come closer, this 2py1 this 2py1 से तो overlap करिवो and 2pz1 overlap करिवे. 2pz1 z1 overlapping तो easy, ସେମାନେ जेतले closer हेबे एमाने easily overlap करि जिवे. but 2py गुडा को भी टर्न हबो, 2py गुडा को भी बंका हेकि overlap करिवो, because overlap कले ସେମାନେ stable हेबे and each system in this universe wants to remain in stable form. So if they come closer, then 2py1 of one atom overlap with 2py1 of other. Also 2pz1 of one atom overlap with 2pz1 of other. माने आरो 2pz1 टा तारो 2pz1 से तो overlap करिवो and this atom रो 2py1 टा this atom रो 2py1 से तो overlap करिवो. overlapping figure टा एमती देखैछि. सो जेड ओवरलैपिंग टा इजी, वाई ओवरलैपिंग पे ये भी टर्न हबो, ये भी टर्न हबो. तेणु एमिति फिगर रे देखैछि. सो ओवरलैपिंग हला परे बोथ बिकम्स स्टेबल because
overlapping hela pare look at this oxygen atom ro 2pz re bi 2 electron, this oxygen atom ro 2pz re bi 2 electron. Similarly ye jete overlapping he jibo, this oxygen atom ro 2py are having 2 electron, this oxygen atom ro 2py having 2 electrons, so both becomes stable. So कौन लिखले, now each oxygen atom will have 2py2 and 2pz2 configuration. Overlapping पर both रो 2py 2 electrons पाइले, so 2py भी 2 electrons पाइला, 2pz भी 2 electrons पाइला. So this type of configuration and both will fulfill their octet and becomes stable. Both will fulfill their octet because 2 electrons पाइगले, 2 electrons पाइगला परे both will fulfill their octet because कौन थिला 2p4 थिला आउटर मोस्ट, सो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाई गेले 2p6 हे गेला, 2p6 हे गेला पर दे विल बी स्टेबल, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड. लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमती ना, दिस ऑक्सीजन रा आउटर मोस्ट ऑर्बिटर 6 इलेक्ट्रॉन, दिस ऑक्सीजन रा आउटर मोस्ट ऑर्बिटर 6 इलेक्ट्रॉन, दे बिकम्स क्लोजर, क्लोजर ले ओवरलैपिंग हला, ओवरलैपिंग को दिस रा 2 इलेक्ट्रॉन और दिस रा 2 इलेक्ट्रॉन आसी गेले, ओवरलैपिंग को 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग हला, 2 पेयर रहिले कोवैलेंट बॉन्ड रे. नाउ दिस ऑक्सीजन एटम रे भी 8 हला, दिस ऑक्सीजन एटम रे भी 8 हला, सो दे फुलफिल देयर ऑक्टेट. Now here 2 electron pairs are shaped, so 2 bonds देखेली and this is called a double bond. O double bond O form है कि O2 molecule आसिला. Here 2 electrons are shared by each atom, as 2 electrons are shared by each atom, hence a double bond is formed by 2 oxygen atoms. Okay, now this is about formation of oxygen molecule, double bond hela, write down. Then we will discuss example of a formation of a nitrogen molecule जोठी triple bond form होबो. ए दुईटा बुझी सारला परे that is very easy. Students, now we will go to formation of nitrogen molecule which is exactly similar with hydrogen and oxygen molecule. से दुईटा पूरा भलो भावे बुझेइछि, तेनु आरो नोट टा दोछि, नोट टा लिखि दियो, आराम रे बुझी परिबो. नाइट्रोजन रो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल अछि देखो, another nitrogen रो 3 half filled orbital अच्छी, so 3 orbitals overlap हेबे, 3 orbitals overlap हेले every orbital रे 2 electron form होबो, so nitrogen भितरे triple bond form होबो. Okay, previous discussion को मने पकेइगिरी ने नोट टा लिखि दियो, clearly बुझी परिबो. This nitrogen molecule formation टा बोर्ड रे बुझेइबिनी, तेनो नोट टा स्क्रीनशॉट रे दे देछि, स्क्रीनशॉट रो नोट टा लिखो. Students, in 3 examples we observed overlapping of atomic orbitals. Atom ro orbitals केमिति overlap होचे हमें देखिले. Those overlapping को हमें जदि examine करिबा, inspect करिबा, observe करिबा, we can get 2 types of overlapping. One overlapping is like this and other overlapping is like this. ऑक्सीजन एटम देखो बा नाइट्रोजन एटम देखो, यू गेट वन ओवरलैपिंग लाइक दिस एंड अनदर ओवरलैपिंग लाइक दिस. दी ऑर्बिटल गुड़ाक कर्व हेकि ओवरलैपिंग होती. So 2 types overlapping mean, one is head on overlapping, other is sidewise overlapping. टिक्के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कथा मने पकाओ, एमिति 2 types रो overlapping देखुथलो. So कौन लिखले हमें, examining the overlapping of orbitals, we can divide them into 2 parts, bit 1 head on overlapping, bit 2 sidewise overlapping. माने this is head on overlapping. माने look at, here is the nucleus of atom. ऑक्सीजन एटम रो ऑर्बिटल फिगर देखो, तो हियर आमे देखि परिबा ऑक्सीजन रो न्यूक्लियस बा नाइट्रोजन एटम रो भी ऑर्बिटल डायग्राम देखो, हियर आमे एज्यूम करि परिबा नाइट्रोजन रो न्यूक्लियस एंड ए जो लाइन टा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को जॉइन करिछि ताकू आमे कहि परिबा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. न्यूक्लियस को न्यूक्लियस जॉइन करथवा लाइन टा होछि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. सो लुक एट हेड ऑन ओवरलैपिंग कोटा हला ना, जोठी ओवरलैपिंग डा अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होछि, बट ए ओवरलैपिंग डा कोन होछि एबव इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होछि. सो
ओवरलैपिंग गुडी को आम टू कॉमन टाइप रे डिवाइड करि परिबा वन इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने एटम गुडिकर न्यूक्लियस को जॉइन करथुबा लाइन टा जेमिति थिबो ओवरलैपिंग सेही लाइन रे हबो दैट इज ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड दिस इज ओवरलैपिंग अबव इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बिकॉज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टा एमिति रहला मु एठी एई ऑर्बिटल टा देखैनी ओके दिस ऑर्बिटल टा न देखै कि एमिति देखैछि बिकॉज ऑक्सीजन रो फिगर रे एटा तमे मिसी की देखुतलो सो एटा जे तमे मिसी की देखिबो फॉर एग्जांपल एमिति उडा ऑर्बिटल एटी देखैबी एमिति उडा ऑर्बिटल एटी देखैबी सो एमाने जेतेबेले जॉइन ओवरलैप करूचंती एठी आर न्यूक्लियस अछि ऑक्सीजन रो एठी ऑक्सीजन रो न्यूक्लियस अछि सो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सो दिस ओवरलैपिंग इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड दिस ओवरलैपिंग इज अबव इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिमिलरली दिस भी ओवरलैप हे परिबो बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस so overlapping of orbitals ta mainly two types re hela along internuclear axis below internuclear axis along internuclear axis overlapping को head on overlapping कहउछे above or below internuclear axis को sidewise overlapping कहउछे then come to detail डी पढ़िबा head on overlapping also called as axial overlapping it is the overlapping of half filled orbitals along internuclear axis बुझौतली तुमको मु इट टेक्स प्लेस बिटवीन SS SP and PP orbitals internuclear axis overlapping that is head on overlapping is observed between SS SP and PP SS look at S orbital is spherical so this is a sphere and nucleus is present at its center this is one orbital nucleus is present at its center so they are overlapped along the internuclear axis so this is head on overlapping here 1S 1P here center a nucleus so this is the internuclear axis and the overlapping yetiki add gala yetiki add asila overlapping also takes place along internuclear axis this is one P orbital this is one P orbital here is nucleus and overlapping ko dekho overlapping is taking place along internuclear axis so in all these three cases the overlapping is head on and head on overlapping रे जो bond form हबो that is called sigma bond the covalent bond formed by this type of overlapping is called sigma bond okay आपरे side wise overlapping को जिबा write down this much note very easy students now we will discuss side wise overlapping already side wise overlapping कोन हमें discussions करि सारलेने एटी टिके systematically note ता reading मार देबी खाली it is the overlapping of half filled atomic orbitals above or below internuclear axis टिके पूर्व बुझौथिली along internuclear axis कोन above internuclear axis कोन below internuclear axis कोन and above internuclear axis रे overlap हेले that is sigma bond or head on overlapping but above internuclear axis or below internuclear axis रे overlapping हेले that is sidewise or lateral overlapping and this type of overlapping कोठी देखा जाए PP भितर देखा जिवो PD भितर देखा जिवो DD भितर देखा जिवो जमिति head on overlapping देखा जाउथला SS SP PP भितर देखा जाउथला here sidewise overlapping टा भी PP भितर देखि परिबा P और D सबसेल भितर देखि परिबा but D और D orbital भितर देखि परिबा okay here one example of a PP is shown aguru भी example देखैछि PP आसिले ए PY और PY जतल overlap करूछि सेते बेले एटा side wise overlapping होछि because internuclear axis टा एमित रहला अब always center रे nucleus अछि this is internuclear axis so overlapping is above internuclear axis so this is side wise overlapping ए जो side wise overlapping बुझिबा पई मु गोटे फिगर टे देछि देखो जेउथरे side wise overlapping टा टिके भलो भाबे बुझि परिबो and this sidewise overlapping रे जो covalent bond form हबो that is called pi bond head on overlapping रे जो covalent bond form होतरा that is sigma bond and sidewise overlapping रे जो covalent bond form हबो that is pi bond now come to some important note is first one is in head on overlapping maximum extent of overlapping takes place and in sidewise overlapping minimum extent of overlapping takes place students
Look at to the figure of, you can see head-on overlapping and side-on overlapping, and clearly you can observe that in head-on overlapping, the extent of overlapping is maximum. Man, amount of overlapping is more as compared to side-wise overlapping. Kette amount of orbital overlap hochi, that is more in sigma bond or head-on overlapping, and side-wise overlapping re टिके less. Clearly तमे figure गुड़ा देखि पारछो. So this point is very important. In head-on overlapping, maximum extent of overlapping, माने maximum amount of overlapping takes place, and in side-wise overlapping, minimum amount of overlapping takes place. And overlapping jate more habo, bond jate strong habo. So head-on overlapping ru sigma bond form hochi. So sigma bond is a strong covalent bond, and side-wise overlapping ru pi bond form hochi. So pi bond is a weak covalent bond. Very important conclusion. Head-on overlapping of orbitals maximum, bond formed is sigma, which is a strong covalent bond. Side-wise overlapping of orbitals is less, minimum, so bond formed pi is a weak covalent bond. Okay, now next come to this point. In between two atoms, only one sigma bond is present, but more than one pi bonds can be present. Two atom भितरे sigma bond one ही है परिबो, pi bond more than one है परिबो, two है परिबो, three है परिबो. How look at? Again look at the figure of oxygen molecule. Okay, double bond is formed. In this formation of oxygen molecule, along internuclear axis, one ही orbital overlap करि परिबो, R1 orbital overlap करि परिबे along internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रे दीटा ओवरलैपिंग हे परिबो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो गोटिए लाइन, सेही गोटिए लाइन रे आर गोटे ऑर्बिटल ओवरलैप हे परिबो. सो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड. बट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रे एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रे गोटे हेड ऑन ओवरलैपिंग हैला और साइड वाइज ओवरलैपिंग दीटा हेछि. 2p orbitals undergo side-wise overlapping. Okay, so pi bonds can be more than one, it can be two, it can be three, but sigma bond will be only one, which is clear from the figure of nitrogen molecule. So very important, in between two atoms, only one sigma bond is present, but more than one pi bond is present. Jodi single bond अछि se निश्चित भाव sigma, गोटे double bond अछि ता बेले से 1 sigma 1 pi, and triple bond अछि ता भितर 1 sigma 2 pi, because 1 sigma हे गला along internuclear axis, बाकी गुडा को निश्चित भाव साइड वाइज जेतरा ओवरलैपिंग हेछि से भितर ओनली 1 ही along internuclear axis हबो, बाकी गुडा को सब साइड वाइज ओवरलैपिंग हबो. ओके, सो इफ हम एमिति डबल बॉन्ड टे देखेबा ता हेले तार 1 इज सिग्मा अदर इज पाई, लोएस्ट टा को सिग्मा दोचे अपर जाको पाई. ट्रिपल बॉन्ड जे देखेबा ता हेले 1 सिग्मा 2 पाई. ओके, so this much write down. Students, now difference between sigma bond and pi bond is an important 2 marks question in your class test. Already we have discussed sigma bond and pi bond. Now the difference is coming on the board or coming on the screen. Pause the video and write down the difference between sigma bond and pi bond. Listen students, sigma bond pi bond difference टा मो बोर्ड रे लेखुनी, so screen रे आसुची, वीडियो को पॉज करिके sigma bond pi bond रो difference टा लिखि दियो. I hope you have write down the sigma bond pi bond difference. Now come to properties of covalent compound. Now we will discuss properties of covalent compound. जेमिति हमें डिस्कस करथिले properties of ionic compound, सेमिति हमें डिस्कस करिया properties of covalent compounds. The compounds formed with help of covalent bond are called covalent compounds. जो obviously जो compound रे covalent bond is present, they are called covalent compounds. The different properties of such compounds are: bit 1, they are soft in nature. We know ionic compounds are hard, covalent compounds are soft as compared to ionic compounds.
The compounds are usually liquids and gases. Ionic compounds are always solids. Covalent compounds are usually liquids and gases. They do not possess definite geometry. Definite geometry kotha ionic compound ro bujheithili. They possess definite geometry, but covalent compounds do not possess definite geometry. Emanଙ୍କର arrangement or shape fixed nuhe. It can change. Next is covalent bond or covalent compound may be polar or non-polar. Recall students, in ionic bond I have told that ionic bond and ionic compound are always polar, and in covalent bond or compound may be polar or non-polar. एठी तुम माइंड को आस्तबो कौन है पोलर कौन है नॉन पोलर. डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो रे पोलर एंड नॉन पोलर आसी जीवो. ओके, इन दिस वीडियो खाली हमें रिमेंबर करथिबा all ionic bond and ionic compounds are polar, but a covalent bond or covalent compound may be polar or non-polar. Next video रे आको पुणी हमें डिस्कशन करिबा. फर्स्ट हमें एक्सप्लेन करिबा व्हाट इज पोलर एंड नॉन पोलर, देन ए क्लॉज दीटा भी सेठी एक्सप्लेन करिबा. डोंट वरी. Then asuchi, the melting point and boiling point of such compounds are less than that of ionic compounds. Ionic compounds melting point boiling point is more, and covalent compound melting point and boiling point is less, because ionic compound bond are very strong, covalent compound bond is weak than ionic bond, so covalent compound melting point boiling point is also less. Next asila, these compounds are non-conductors of electricity both in liquid state or gaseous state, okay, or solid state. जो स्टेट होची हो, कोभालेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स रे आयन्स प्रेजेंट अछंती. से आयन्स गुडाक जदि टिके से आयन्स गुडाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि वीक हे जिवो, दे कैन मूव एंड फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट. बट इन कोभालेंट कंपाउंड्स नो सच आयन्स आर प्रेजेंट, सो कोभालेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ electric current. Then asuchi, these compounds exhibit or possess or show isomerism. Students, ionic compounds रा property पढ़ेला बेले isomerism को detail बुझेइथिली, and सेठी जो compound गुडा को सब isomerism देखेइथिली all are covalent compounds. Ionic compounds never show isomerism. Covalent compounds can show isomerism. These are the important properties of covalent compounds. Now, this is a note. In between two atoms, number of covalent compounds may be 1 or 2 or 3, but not more than 3. Any two atoms नियो कोभालेंट कंपाउंड्स 1 हे परिबो बा 2 हे परिबो बा 3 हे परिबो. हमें कोन ऑब्जर्व करछे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भितर 1 कोभालेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भितर 2 कोभालेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भितर 3 कोभालेंट बॉन्ड, बट 4 कोभालेंट बॉन्ड को भी 2 एटम भितर हे परिबनी, और 5 कोभालेंट बॉन्ड को भी 2 एटम भितर हे परिबनी. ओनली 2 एटम्स भितर 1 कोभालेंट बॉन्ड हबो, और 2 कोभालेंट बॉन्ड हबो, और 3 कोभालेंट बॉन्ड हबो. Then come to the term covalency. इलेक्ट्रोवालेंसी टर्म माने पकाओ, ताकू नहीं करी ही कोवालेंसी ही. कोवालेंसी माने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स कोवालेंसी. इलेक्ट्रोवालेंसी रे कोन कहिथिले, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय एन एटम इज इट्स इलेक्ट्रोवालेंसी. हियर तो डोनेशन एक्सेप्शन होनी, शेयरिंग होची. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स. Total number of electrons shared by an atom during molecular formation is called its covalency. For example, hydrogen केतरा इलेक्ट्रॉन शेयर करछि 1, so hydrogen covalency 1. Oxygen केतरा इलेक्ट्रॉन शेयर करछि, this oxygen 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करछि, this oxygen भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करछि, so oxygen रो covalency 2. This nitrogen 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करछि, this nitrogen 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करछि, so covalency of nitrogen is 3. These are the very simple things, students. With this, the fundamentals of covalent bond is completed. Write down. Next video रे हमें enter करिबा most interesting, जहाँ कि एबे पर्यंत तुमको टिके टिके टेंशन दउथुबो, ए polar bond कोन, non polar bond कोन. This will come in the next video. Write down.